नमस्ते। नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाएँ। माई सेल्फ जेनियन डॉक्टर अर्चना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिc science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Now, uh, in previous lecture will be discussed the tetanus. Now continue the tetanus. In previous lecture, discuss the introduction, source and source and positive organism of tetanus. Now in this lecture, route of entry. Apparently travel injuries, animal bites, human bites, open fracture, burns, gangrene in neonates usually via infected umbilical stems, abscess, prenatal drug abuse. These are the route of entry. Tetanus prone wound. A wound sustained more than 6 hours before surgical treatment. A wound sustained at any interval after injury, which is puncture types or shows much devitalized tissue or spec- devitalized tissue or in septic or contaminated with soil or manure. Sport that grain entry can persist in normal tissue for months to years under anaerobic condition. When the oxygen level in the surrounding tissue is sufficiently low and implanted Clostridium tetani spore then germinate into new active vegetative cell that grow and multiple and most importantly produce tetanus toxin. Tetanus toxins are titanospasmin and titanolysin. Titanolysin is not believed to be any specific in the clinical course of tetanus, and titanospasm is the neurotoxic and causes the clinical manifestation of tetanus. Now, mechanism action of tetanus. Clostridium tetani, titanospasm, then excretory transmitter, inhibitory transmitter, then inhibitor transmitter release blocked continuous stimulation by excretory transmitter. Now in this show, first of all, पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ किसी भी कंटामिनेटेड सॉइल या कील्स या रोड्स किसी से भी इन्फेक्टेड हुआ दे उसके बाद में जो न्यूरॉन्स है वो क्या मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन में गए और मोटर न्यूरॉन्स से वो क्या हो गए हाइपर एक्टिव हो गए हाइपर एक्टिव होने की वजह से वहाँ पे जो इनिबिटर सेल्स है उन पे अटैक्स होता है अटैक होने के बाद में क्या होता है पेशेंट पे जो फर्स्ट सिम्टम्स आता है वो कहाँ स्पाज्म आने लग जाता है कहाँ पे स्पेशली नेक एंड जो पे एंड फेशियल जो मसल्स है उनमें स्पाज्म होता है अगर जो मसल्स में स्पाज्म होता है उसको अपन टेरिस टेरिमस टेरिमस कॉल द टेरिमस and Riscus sardonicus is the uh, spasm of neck muscles. Then उसके बाद में पेशेंट को डिस्फेजिया हो सकता है अर्ली सिम्टम्स ये जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे ही इन्फेक्ट हुआ ब्रेन न्यूरॉन्स इन्फेक्टेड हुआ मोटर न्यूरॉन्स इन्फेक्टेड हुआ देन पेशेंट में सिम्टम्स आए सिम्टम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को क्या हुआ जो फेशियल एंड जो मसल्स है उनमें स्पाज्म हो जाएगा उसके बाद में उसको डिस्फेजिया होगा दीज आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ टिटनेस नाउ स्पोर आर एक्सट्रीमली स्टेबल although immersion in boiling water for 15 minutes kill most spore. The exposure to saturated stem under the 15 IBS of pressure for 15 to 20 minutes at a 121 degrees Celsius is highly effective against the spores. Sterilization by dry heat is slower than by moist heat, but is but it is also effective against spores. Ethylene oxidase sterilization is also spirocidal autoclave at the 120
degree Celsius for 15 minutes kills the spore rapidly. Iodine and S2O2 kills spore within few hours. So now the route of entry of tetanus, and the tetanus is continue on next class. And this section powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will be resolve it. Thank you.